Yeah, no. Right. अच्छा, let's try to answer the first question right here. सबसे पहला question, Bismillahirrahmanirrahim, is explain with one example on how a mutation may affect the phenotype of an organism. Any idea? Basically, when there's a mutation, if there's like um, if it's advantageous, then it gets passed on to the offsprings, Hmm. and basically, since it's being passed on in generation, it causes a change, a shift in the allele frequency, and there's like a new phenotype that's formed, something like that. तो ये वाला क्वेश्चन इज नॉट रियली अबाउट कि म्यूटेशन अफेक्ट कैसे करेगा अ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी या हाउ डज म्यूटेशन रिजल्ट इन एवोल्यूशन। वो वाली बात बिल्कुल सही है। एवोल्यूशन या चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी का वन ऑफ द फैक्टर्स इज म्यूटेशन। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि लेट्स से वी हैव एन ऑर्गेनिज्म, लेट्स कॉल दिस ऑर्गेनिज्म ए। ऑर्गेनिज्म ए के अंदर एक म्यूटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पहले उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो F8 जीन है वो म्यूटेट हो गया, जिसकी वजह से अब ब्लड क्लॉटिंग अब नॉर्मल है एंड दैट लीड्स टू हीमोफीलिया। डिड दैट चेंज द phenotype of the organism? Yes, कि it did. पहले नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग थी, अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग या एक कंडीशन होती है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि म्यूटेशन की वजह से ये फिनोटाइप अफेक्ट कैसे हुआ। मतलब हाउ डिड म्यूटेशन लीड टू हीमोफीलिया, और इन अदर वर्ड्स हाउ डिड म्यूटेशन लीड टू अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, ये सवाल है। Oh, so like basically, it can basically cause a change in the DNA sequence of a gene, and it करेक्ट। can alter the protein that the gene codes for, and then it basically can the when the protein is changed, it might or alter the organism's characteristics. Like for example, in sickle cell anemia, because there's an altered hemoglobin protein that's produced, and करेक्ट। the abnormal hemoglobin protein, it causes the red blood cells to become sickle shaped instead of the normal round shaped. बिल्कुल सही। अच्छा, जस्ट वन थिंग, ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर करेक्ट। यू सेड दैट द प्रोटीन इज गोना बी ऑल्टर्ड। प्रोटीन मॉलिक्यूल को ऑल्टर कैसे करेंगे? In terms of amino acids, yeah, in terms of the shape, yeah, in terms of both. मतलब कि you said that the protein molecule is going to be altered. Protein molecule change कैसे होगा? उसका primary structure change होगा, उसका tertiary structure change होगा, या दोनों change होंगे? The primary structure gets changed because like the base sequence of DNA that's changed, and basically हम्म। that basically changes the gene, and the genes that code for the protein, basically, so the amino acid sequence that changes, so the primary structure it's changed, and the primary structure affects the tertiary structure, so the हम्म। tertiary structure gets changed that alters the protein. बिल्कुल सही। सो वी नीडेड टू टॉक अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन कि म्यूटेशन होगी अब डायरेक्टली उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सो नॉट अक्रॉस अ सीरीज ऑफ जनरेशंस, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें म्यूटेशन हुई है, जिसमें म्यूटेटेड जीन है, उसका फिनोटाइप इफेक्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो म्यूटेशन होती है, दिस म्यूटेशन कॉजेस द बेस इन द डीएनए बेस सीक्वेंस टू चेंज। अब टेल मी दिस, अगर डीएनए बेस सीक्वेंस के अंदर एज इन द जीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो जाता है, डज इट मीन कि अब कोडॉन भी थोड़ा सा म्यूटेट हो चुका है या चेंज हो चुका है जो बनने जा रहा है अब एमआरएनए स्ट्रैंड के अंदर? Yes. एंड इफ द कोडॉन चेंजेस, इज देयर अ रॉन्ग एंटी कोडॉन जो अब आने लगा है इन द राइबोसोम? Yes. And because of a wrong anticodon, a wrong amino acid is about to come into the polypeptide chain. So if a question comes जैसे कि sort of यहाँ पे था कि अगर एक एक जीन के अंदर डीएनए बेस सीक्वेंस थोड़ा सा ऑल्टर होता है, हाउ डज दैट अफेक्ट कि कौन सा अमाइनो एसिड आने वाला है? बिकॉज you would have learned this in AS.
The process goes like this. Okay, you have the nucleotide base, जो न्यूक्लियोटाइड बेस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए बेस. दिस इज द कोडॉन. And then from the codon, we have the anticodon. And then from the anticodon, we have the amino acid. Ajay, एक चीज, since you're also studying for AS, could you tell me the difference between an anticodon and a triplet? Any idea? I think the difference is like basically the anticodons, they're on the tRNA, I think, Correct. and the codons, they're present on the mRNA. And the codons represent only mRNA. What I'm asking is the difference between the anticodon and the triplet. So, tell me the difference, but not in terms of the location. मतलब location तो हमें पता है, right? कि triplet DNA के अंदर होता है, anticodon tRNA के अंदर होता है. In terms of their bases. Now, let's look at this. For example, एक triplet हमारे पास आया, which is A, C, G, T, and C. Let's say ये let's make two triplets, right? So we have two triplets right here जो कि जीन के अंदर थे. अब इसके इस ट्रिपलेट के कॉम्प्लीमेंट्री अब कोडॉन बनाया गया. कुड यू टेल मी द कोडॉन का सीक्वेंस क्या होगा फॉर दीस टू ट्रिपलेट्स? Uh, UGCA, G and C. So U, G, C, A, G, and C. बिल्कुल सही. Could you tell me the anti-codon sequence now? For the first one, right? For the entire thing. Um, Again, UGCA and G and C again. Okay, that's where the problem is. Say, अच्छा, always remember जब भी हम anti-codon की बात करते हैं, you told this correctly, you were talking about a tRNA molecule. Now imagine this, right? In the ribosome, you have this mRNA strand, और इस mRNA strand में बहुत सारे codons हैं. One of the codon is UGC, और उसके बाद वाला codon is AGC. Isn't the anti-codon going to be complementary to the codon? Oh, yeah. Mm-hmm. So anticodon for the first codon is going to be A, C, G, and for the second codon it's going to be U, C, G. Now I want you to look at the anticodon sequence and the triplet ka sequence. What difference do you see? Um, they don't have the base thymine, they have uracil instead of that. And is everything else same apart from that? Yes. This shows us that a triplet is the same as an anticodon with the only difference कि triplet तो DNA के अंदर होता है और DNA के अंदर U uracil नहीं होता, थाइमिन वाला बेस होता है. जबकि anticodon is an example of an RNA molecule. RNA के अंदर थाइमिन नहीं होता, uracil होता है. So technically triplet and anticodon are the same. It's just that wherever you find thymine in the triplet, you will write uracil in the anticodon. Because think of it like this. इस चीज का complementary and वापस से इसका complementary. Don't we just go back to step number one? क्योंकि हम दो बार complementary ले रहे हैं. So for example, if there is a mirror right here, and then you have some object right here. अब इस object का reflection is going to be seen on the mirror. What if I tell you to take the reflection in the mirror? Then it goes back. It comes back to this object, right? Yeah. तो इट्स टेक्निकली द सेम थिंग, राइट? हम इस चीज का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, एंड फिर मिरर का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं, व्हिच मींस वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द रियल ऑब्जेक्ट वंस अगेन. इट्स जस्ट दैट डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल का फर्क है. यहाँ पे थाइमिन होगा एंड यहाँ पे यूरासिल होगा. जब एंटीकोडॉन बदलेगा, एंड गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अमीनो एसिड का सीक्वेंस एज यू सेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन वो बदलेगा, मीनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंजेस. जब प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, अगला वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर भी चेंज करेगा.
So causing the tertiary structure to also change. And it's good that you gave an example right here, क्योंकि it's always good to give examples while you're explaining a particular point. क्योंकि question में भी लिखा हुआ था, explain with one example. Even if question में ना भी लिखा हो, it's always better to include one example, ताकि explanation में एक तो वो facilitate भी करता है, और ऊपर से it's always better to write it down, क्योंकि कभी कभार you might just get the AVP point, any valid point वाला mark, if you put the example down. So let me just complete this. Tertiary structure to also change. Example, sickle cell anemia. And then it's not just कि हमने सिर्फ example का नाम लिख दिया. We can use this example to help in our explanation. जैसे sickle cell anemia के बारे में, we have the glutamic acid. Glutamic acid में amino acid change किया गया to valine. अब क्योंकि वेलिन का हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप था एंड ग्लूटामिक एसिड का हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप था, दिस हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप डज नॉट अलाउ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू डिसॉल्व, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस तरीके से. एनी कंफ्यूजन फ्रॉम दिस? No, it's clear. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. थोड़ा सा ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, व्हिच इज ऑलवेज गुड टू अटेम्प्ट, क्योंकि ये सबसे मुश्किल टाइप्स होते हैं. सो लेट्स सी. वी हैव अ म्यूटेशन ऑफ अ जीन फॉर द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. मतलब एक म्यूटेशन हुई है. किस में म्यूटेशन हुई है? उस जीन में म्यूटेशन हुई है जो कि कोड करता है फॉर द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, और उसकी वजह से हो गया सिकल सेल एनीमिया, व्हिच इज लीथल और नियर लीथल कंडीशन. बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, could you tell me what is the name of the protein which codes for this beta polypeptide chain? The protein. Do you remember the name? Mm. How about beta globin? Do you remember that? Yeah. B- beta globin and alpha globin. तो बीटा ग्लोबिन एंड अल्फा ग्लोबिन बेसिकली दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. ये खुद से ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, एज इन इनका भी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स है. बीटा ग्लोबिन से निकलेंगी टू बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स, एंड अल्फा ग्लोबिन से निकलेंगी दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. यू कुड रिमेंबर इट लाइक दिस: बीटा पॉलीपेप्टाइड, बीटा ग्लोबिन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, अल्फा ग्लोबिन. एंड हाउ टू रिमेंबर द वर्ड ग्लोबिन? हेमोग्लोबिन जो नाम है इस पूरे मॉलिक्यूल का, जो कि आरबीसीज में होता है, ग्लोबिन का वर्ड क्यों है यहाँ पे? बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम दीज प्रोटीन्स व्हिच हैव द वर्ड ग्लोबिन इन देम, इसलिए हेमोग्लोबिन. एंड लुक एट दिस, हीम. डू यू रिमेंबर द हीम ग्रुप फ्रॉम एएस? Yeah, the ones with the four, it had like four groups, I think the iron ones. बिल्कुल. हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सो यू हैव टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड टू बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हर ग्रुप के अंदर यू हैव वन हीम ग्रुप. हीम ग्रुप को बोला जाता है अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. यू नो द प्रोस्थेटिक्स जो कुछ लोग पहनते हैं, दोज हु हैव सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेबिलिटी, जैसे लेग का प्रोस्थेटिक, आर्म का. इट्स नॉट रियली दैट, बट इट्स सिमिलर टू दैट. उसका जो नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप. द रीजन वाई इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक आयन होता है, दैट इज एन Fe2+ आयन. हर हीम ग्रुप के अंदर वन Fe2+ आयन होता है, एंड वन Fe2+ आयन्स combines with one oxygen molecule. Okay, let's move on to the question. Only people who are homozygous इस एलील के लिए have sickle cell anemia. मतलब कि सिर्फ वो लोग जिनके पास रिसेसिव कंडीशन या रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हो रही है होमोजाइगस फॉर्म में, सिर्फ वही सिकल सेल एनीमिया होगा उनको. डू यू रिमेंबर द थ्री phenotypes which we did? Normal person, mild sickle cell anemia, and sickle cell anemia. Yeah. So this sentence writer is talking about वो थर्ड वाला जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, पूरी तरीके से सिकल सेल एनीमिया, नॉट माइल्ड सिकल सेल एनीमिया. All hemoglobin is affected in people who have sickle cell anemia.
यहाँ तक तो ये चीज हमें पता थी। एट लो ऑक्सीजन लेवल्स, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आरबीसी का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। दिस लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ द कैपिलरीज। हमें ये भी पता है कि जब आरबीसी का शेप ही थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी द कैपिलरी के विथ एंड आरबीसी के विथ, दिस वाज रियली कट टू कट, मतलब इनमें 19-20 का ही फर्क था। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर द आरबीसी टू पास थ्रू द कैपिलरी। अब जब आरबीसी का शेप डिस्टॉर्ट हो गया, तो इट्स नाउ you're gonna be even more harder to pass through the capillary। इसलिए लिखा है कि कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, एंड बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, एडिंग टू सिवियर एनीमिया। कुड यू टेल मी व्हाट्स दिस फैगोसाइटोसिस, ये क्या चीज है? ये कौन सा प्रोसेस है? I think it's like that process. It was like with the um, it, it's like a sort of endocytosis. We learned that in AS, I think. Yes, Like so a when sort of. yeah, Hmm. when basically it was something involving lysosomes, and there was destroying of like cells, I think. ओके, सो फैगोसाइटोसिस बेसिकली ये था कि इंडोसाइटोसिस सॉर्ट ऑफ इट, यू आर राइट, बट इसमें फैगोसाइट्स इन्वॉल्व थे। सो यू हैव अ सेल एंड देन देयर इज अ स्मॉल सब्सटेंस आउटसाइड ऑफ द सेल। अब इस छोटी सी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है। द वे इज गोना डू दैट इज ये पूरा बड़ा वाला जो सेल है, इट्स गोना engulf दिस स्मॉल सब्सटेंस, एंड उसके लिए इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। सो फैगोसाइटोसिस यू कैन थिंक ऑफ इट एज a special type of endocytosis। Endocytosis बहुत तरीके के होते हैं, and one of that is phagocytosis। So yes, you're right about phagocytosis। Okay, leading to severe anemia। Okay, figure 4.1 जी जो है, it shows the distribution of malaria, another disease, and sickle cell allele, मतलब the allele responsible for sickle cell anemia। अब ये जो लाइंस बनी हुई हैं जिन रीजन्स में, उनमें सिकल सेल एलील बहुत ज्यादा है, एंड जो रीजन्स में लाइन नहीं बनी हुई, विच आर डार्क एंड नॉट लाइट, फॉर एग्जांपल नॉट दिस, दिस, उनमें मलेरिया है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द सिकल सेल एलील occurs at such high frequencies in some area। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो सिकल सेल एलील है, वो कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों हो रहा है? ट्राई दिस। सो दिस इज प्योरली एन अजम्पशन क्वेश्चन कि ये हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, जिसकी वजह से वी लीड टू दिस कंक्लूजन कि मलेरिया, सॉरी, सिकल सेल एलील कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। इट्स एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। सो जस्ट ट्राई दिस। So like, could it be because like the ones which have the sickle cell allele, they have some resistance to malaria, and बिल्कुल basically सही। this gives them the survival advantage. So like the the either if the person is homozygous for sickle cell, they die off, but the ones which have like a which are heterozygous for sickle cell, they Mhm. survive because they are also resistant to malaria.
and Okay. they pass the trait on to their offspring. So the carriers are most likely to survive, and this keeps the allele at like high frequency in the malaria affected areas. Hmm. बिल्कुल सही, perfect. तो we divided the people या the organisms into two categories. एक वो जिनको सिकल सेल एनीमिया है, मतलब होमोजाइगस उनका जीनोटाइप है, उस किसी उसके लिए तो they are gonna die off. And the second group of people was the heterozygotes, or those people जिनका heterozygous का जीनोटाइप था. They had mild sickle cell anemia, but they weren't gonna die off because of it. And sickle cell allele भी obviously उनमें था, where it was not getting expressed fully. In Hemoglobin, you said that they are going to be resistant to malaria as well. So, because they're resistant to malaria, they are able to survive, and then they pass on the advantageous alleles, which is the allele which makes them malaria resistant. And number two, the unwantedly या unfortunately जो sickle cell allele है वो भी passed on हो जाता है. Just to confirm, that's what you said, right? Yeah. या बिल्कुल सही पॉइंट्स है सारे. एंड यस कि जो रीजन्स में सिकल सेल एलील ज्यादा है वो मलेरिया अफेक्टेड एरियाज भी हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज रीजंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन. एंड ये तरीके के क्वेश्चंस इज व्हाट यू शुड लुक फॉर इन द एग्जाम. सबसे पहले they just give you the topic name and then you have to write all you know about it. Explain what is meant by artificial selection. It's like a process where we intentionally breed plants or animals like to promote the Mhm. desirable traits and to suppress the undesirable ones. And like this it's the selection pressure, it's guided by the choice of Mhm. it's like guided by the human choice, not environmental pressures. Okay. And the alleles there, they get passed on over generations. सही. अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग. इन सिलेक्शन प्रेशर जो ऑर्गेनिजम्स को हम आपस में इंटरब्रीड करवाते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनी रैंडम ऑर्गेनिजम्स? The ones with the desirable trait, and the other one can be either, it can also be the one with the desirable trait, or it can be any organism. हम्म, बिल्कुल सही. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट ये बताना कि ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के एक्ट इंटरब्रीड करेंगे इन द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस जिससे F1 जनरेशन बनेगी. बाकी सब बिल्कुल सही था. सो वी हैव ह्यूमंस जो कि सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई करते हैं, अपने फायदे के लिए अप्लाई करते हैं. वी ब्रीड द पेरेंट्स टुगेदर जिनकी सूटेबल ट्रेट्स हैं, जिनकी पास एडवांटेजेस एलील्स हैं, व्हिच इज व्हाट वी सी इन द फॉर्म ऑफ देयर phenotypes. एंड जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें भी एडवांटेजेस एलील्स हैव पास डाउन ऑनवर्ड्स. सो दैट्स ऑल 4 पॉइंट्स बिल्कुल सही. ओके, नाउ okay, this is a maths question. We can move on. Okay, okay, this is interesting. So we have the Atlantic herring, Clupa herringus. This is the genus of the organism, and this is the species. Again, remember, this is the binomial naming system. और किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए यही सिस्टम फॉलो होता है, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम, जहाँ पे द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज द जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज ऑलवेज द स्पीशीज. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये लार्ज पॉपुलेशन में रहता है और इनकी पॉपुलेशंस को शोल्स कहते हैं. एंड दे मे ग्रो अप टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये अपीयरेंस दिखाई हुई है इस फिश की, इस एनिमल की. Now, this length of this animal right here, this fish right here, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है. मतलब कि you will find some organisms of Clupa herringus जो कि बहुत छोटे and some जो कि बहुत बड़े. So we have a wide variation in the length of this organism. Figure 8.2 दिखाता है the numbers of fish of different lengths इसी organism की population. So, for example, here you have the number of fish and here you have their length. So, let's say अगर length of fish 20 centimeters है तो उसके corresponding कितनी fish होंगी. अगर length 10 centimeters है तो उसके corresponding कितनी fish होंगी. इस तरीके से arrows selection pressures दिखाते हैं, P and S. ये है selection pressures. So why is it downwards? Because selection pressure यही करता है, right? It
fully tries to eliminate one set of organisms by disfavoring them. Is that right? Yeah. क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्शन प्रेशर फेवर नहीं करना चाह रहा होता, उनकी अमाउंट या उनकी जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी उनको कम करेगा, विच इज व्हाई यू कुड थिंक ऑफ इट एज इट पुशिंग डाउन ऑन द ग्राफ। इस तरीके से इसको कम करने की ये कोशिश करेगा। Sketch a graph on the axis below to show the distribution of the length of this animal जब selection pressures operate करेंगे कुछ सालों के लिए। So question number one, which type of a selection pressure is this, Stabilizing. and why is that? Because the selection pressure, it's in the favor of the organisms in the middle, and it's not favoring the organisms at both extremes. बिल्कुल सही। तो name this type of natural selection stabilizing selection। अच्छा, how would you draw the graph for stabilizing natural selection का result? It's like a normal distribution curve. Okay, compare this graph which you're gonna draw to this graph. Is the mean going to be the same? Yes. Yes, the mean is going to be the same. क्यों? क्योंकि selection pressures ने mean को affect नहीं किया, right? We just have to look at वो groups of organisms जिनकी frequency कम हुई है, जिनकी frequency same रही है। इसका मतलब selection pressure ने इनको favor किया था। इनको die off करवाने की कोशिश selection pressure ने नहीं की। They were the fitter ones to survive। तो mean तो same रहने वाले हैं। What's gonna happen to the width of the graph? Is it gonna become more wider? Is it gonna be the same, or is it gonna become narrower? It's gonna become narrow. Narrow, बिल्कुल, क्योंकि narrow क्यों? It's when it's gonna be a sort of a graph like this and not like this. We are trying to show कि ये जो extreme organisms थे, जिनके extremes पे phenotypes थे, इनके die off करेगा because of the selection pressure. So it's gonna be somewhat like this. So yes, you're right. It will be a sort of a normal distribution का curve. Mean या mode same होगा and extreme के phenotype वाले organism die off कर जाएंगे। We can just not increase इसकी length ना ज़्यादा, yeah, इस तरीके से। Okay, now sketch uh, okay, yeah, interesting। एक ग्राफ sketch करना है to show the distribution of the length, लेकिन इस बार सिर्फ selection pressure S काम करेगा for a few years and not selection pressure P। Which type of natural selection is this? Directional. Okay, and the reason? Because there's only selection pressure S that's working, so uh, so it's gonna be towards one extreme, so like the graph it shifts to the um left. To the left, बिल्कुल, to the side which is getting favored. So when we compare this graph to the graph which we just talked about, कि जहाँ पे सिर्फ selection pressure S काम करता है, that is directional, you're right, क्योंकि वो सिर्फ एक extreme को disfavor कर रहा है and दूसरी extreme को favor कर रहा है। तो जिस भी extreme को favor करेगा phenotype की, the graph is gonna shift towards that. So if selection pressure S यहाँ पे है, it's gonna disfavor ये वाला extreme and it's gonna favor this, so graph shifts to the left. Okay. Is it gonna be narrower or is it gonna be the same width? The same width. The same width. Okay. Let's talk about this. अगर ये जो extremes हैं phenotypes के, अगर इनको खत्म कर दिया जाए, doesn't a part of the graph just get eliminated? Yeah, it does. So So like it's gonna be a bit narrower, but like towards the left side. बिल्कुल, क्योंकि compare this entire thing and then when you remove this, the graph ends at this dot right here। तो इसका मतलब पहले जो width इतनी थी, अब वो सिर्फ इतनी रह गई। So yes, the graph narrower and towards the left, those are the two marks which you're gonna get। So narrower and towards the left, इस तरीके से। Let me just double check। Yes, so just the peak would shift to the left। अच्छा, so this is directional selection।
Okay, this is interesting. Suggest two examples of selection pressure. So the question is asking you कि give any examples कि selection pressure क्या apply हो सकता है इस natural selection में. मतलब कि एक ऐसा सिलेक्शन प्रेशर जो कि सिर्फ ऐसी फिश को टारगेट करेगा जिसकी बहुत ज्यादा लेंथ है. The like the presence of a predator. प्रेडेटर. ओके, बिल्कुल सही. सो वी कैन अज्यूम कि एक ऐसा प्रेडेटर है व्हिच लाइक्स टू ओनली फीड ऑन दोस फिश जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा है बिकॉज़ दे कैन गेट मोर फूड फ्रॉम दैट. बिल्कुल प्रेडेटर. एंड नंबर 2. Um, More like fishing because for sales they're gonna be they want to catch more fish which are like bigger in size. बिल्कुल सही. और फिशिंग दे वुड वांट कि उनकी ये दे वुड वांट डिजायर होगी कि हम ऐसी फिश को कैच करें व्हिच इज गोना गिव अस मोर वैल्यू फॉर आवर मनी. एंड बिगर फिश व्हिच हैज अ बिगर लेंथ इज गोना गिव देम दैट. सो यू आर राइट. फिशिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस डायरेक्शनल सिलेक्शन जहाँ पे एस का सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई हो. करेक्ट. Okay, let's move on. We have done this sort of a question. Same case here. Okay, okay. I'm looking for okay, yeah. I'm looking for a knowledge-based question. Content जिसमें test हो which you have learned already and not just application. So let's just try this. So this passage is a summary जिसमें main principles and natural selection के कुछ words omit किए गए. Write down the most appropriate word in each space. I didn't find the answer for the first one. The rest of it, I'm done with it. What's the second one? Yet the numbers in the population remain roughly constant, Mhm. and this is because many die due to the environmental factors, and there is competition amongst members of the population, Okay, I'm just and gonna put a star. Mhm. they reproduce and pass on their alleles to their offspring, Correct. and this may lead to a change in the gene pool of the population. Mhm. Okay. Let's talk about number one and then number three. सबसे पहले number one. ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है जिससे दो इंडिविजुअल्स मेट टुगेदर एंड उसकी वजह से एक नई जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है. व्हिच लाइफ प्रोसेस इज दिस? इज दिस सेंसिटिविटी? इज दिस मूवमेंट, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन? व्हिच टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस? Reproduction. रिप्रोडक्शन. तो इट्स टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत को क्या कहेंगे? कैन वी कॉल दैट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल? Yes. कि दिस ऑर्गेनिज्म is fertile. This organism can reproduce and produce another fertile offspring. तो पोटेंशियल की जब बात आती है, इट्स क्या इस ऑर्गेनिज्म में पोटेंशियल है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके? सो इन अदर वर्ड्स, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. नाउ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट रिप्रोडक्टिव जितना ज्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन लिखना. सो यू कैन राइट रिप्रोडक्टिव, यू कैन राइट रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, एनीथिंग वर्क्स. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 सही था. अब नंबर 3, नेचुरल सिलेक्शन. डजंट दिस लुक लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो हमने किए थे? Yes. कि सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन होती है, फिर उसके बाद वेरिएशन आती है ऑफ स्प्रिंग में, और फिर उसके बाद ओवर पॉपुलेशन क्यों होती है? बिकॉज मैनी डाई ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयरफॉर डू नॉट रिप्रोड्यूस. व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द रिमेनिंग ऑस्ट्रिच जो सर्वाइव कर चुके हैं, देयर इज डैश amongst members of a population, and those with the features best adapted to the environment survive. Let's say I have an organism called organism A and an organism called organism B. ये दोनों organisms were part of an F1 generation, first filial generation,
जो कि दो ऑर्गेनिजम्स ने जब इंटरब्रीड किया तो ये F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। क्या ये ऑर्गेनिज्म सेम होंगे? क्या इनकी फिनोटाइप्स बिल्कुल सेम होंगी? Yes. आई श्योर? मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते No, no. हैं उनके बीच में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। Yes. तो wouldn't variation be a better word here? Okay, let's try to read it through. There is dash amongst members of a population. तो members of a population के बीच में कुछ होगा, and those with the features best adapted to the environment वो survive कर जाएंगे। तो क्योंकि दोनों organisms में variation है, अब जिन में एडवांटेजेस एलील्स होगा वो सरवाइव कर जाएंगे, जिनमें नहीं होगा वो डाई ऑफ कर जाएंगे। सो कैन वी से वेरिएशन एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द मेंबर्स? Yeah. अब व्हाई इज द आंसर नॉट कंपटीशन? लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द करेक्ट आंसर। वेरिएशन। अच्छा, कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि द नेक्स्ट सेंटेंस एक्सप्लेन्स द वर्ड कंपटीशन वैसे ही। सो लुक एट दिस, those with the features best adapted to the environment to survive करते हैं। This is competition. The organisms are competing कि किसकी फीचर बेहतर होगी, किसकी फीचर बेहतर होगी। Those with the features best adapted to the environment वो survive कर जाएंगे। लेकिन अगर वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर कंपटीशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज व्हाई द आंसर यहाँ पे वेरिएशन होगा। सो आर दीज टू थिंग्स, दिस मेक सेंस? Yeah, they do. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, या वी कैन सॉल्व दिस इन स्पीसिएशन है। सो वी हैव द ग्रीनिश वॉर्बलर, एक ऑर्गेनिज्म की टाइप है, एंड ये रहा उस ऑर्गेनिज्म का नाम। दिस इज अ स्पीशीज। किस चीज की? ऑफ स्मॉल बर्ड। तो मतलब ऐसे बर्ड जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, सो ऐसी स्पीशीज ऑफ स्मॉल बर्ड दैट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया ऑन द सदर्न एज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, फिगर 1.1 इस तरीके का एक एनिमल दिखाती है। Thousands of years ago, populations of the greenish warbler spread around the western and the eastern edges of the Himalayan mountain range ताकि वो अपने आप को establish कर सके नॉर्थ ईस्ट यूरोप एंड साइबेरिया में। So you have these organisms in the south. So let's say this is the Himalayan mountain range. This is the south. यहाँ पे पहले सारे birds थे। फिर इन कुछ birds ने migrate किया to the west and the east of the same mountain range। क्यों किया? क्योंकि उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, ज्यादा पॉपुलेशन लानी थी नॉर्थ ईस्ट यूरोप एंड साइबेरिया में। सो अगर वो साउथ में है, पहले वो वेस्ट में जाएंगे, फिर ईस्ट में जाएंगे, एंड देन दे आर गोना गो टू यूरोप एंड साइबेरिया वहां से। अच्छा, पहला पॉइंट है कि एक ग्रेजुअल चेंज आई in the characteristics in these populations, leading to different forms of the greenish warbler. Which process is this? Phenotype का change होना, different forms बनना same species की. What is the name of this process? Evolution. Evolution, okay. And there is also something else that leads to evolution. यहाँ पे हमने Natu- geographically, sorry? uh, it could be speciation. स्पीसिएशन, बिल्कुल सही। जब हमने यहाँ पे जियोग्राफिकली सेपरेट किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अभी भी सदर्न पार्ट में हिमालयन रेंज के, कुछ वेस्ट में चले गए, कुछ ईस्ट में चले गए, वी जियोग्राफिकली सेपरेटेड them, जिसकी बेसिस की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स बनी। सो दिस इज, कैन वी से एलोपैट्रिक स्पीसिएशन? Yes. क्योंकि geographical separation थी। Now, one example of this gradual change in the phenotype is the song of the male warbler। तो ये जो warblers थे ये songs गाते थे, ये organisms, ये birds। Male warbler जो song गाता था उसमें gradual change आया, और ये बहुत डिफरेंट था, एज इन द न्यू सॉन्ग एंड द ओल्ड सॉन्ग, दीज आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इज आल्सो यूज्ड इन मेटिंग बिहेवियर। सो यू कुड थिंक ऑफ दिस सॉन्ग as a mating ritual. Can we think of it like that? Yes. So you just keep this in mind. अच्छा,
जब ग्रीनिश वॉर्बलर्स नॉर्थ ईस्ट यूरोप से अब उनको मिलते हैं जो साइबेरिया से रहे, सो सिचुएशन नंबर वन, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर इन द सदर्न पार्ट। सिचुएशन नंबर टू, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं टू वेस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, कुछ टू ईस्ट। वेस्ट से फिर वो यूरोप निकल जाते हैं, ईस्ट से फिर वो साइबेरिया निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे एलोपैथिक स्पीसीशन होती है। नाउ यू हैव वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस यूरोप वाला पार्ट एंड वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस साइबेरिया वाला पार्ट। इनकी मीटिंग की बात हो रही है। When these greenish warblers from Europe and Siberia meet each other, तो अब पता चलता है कि कोई मेटिंग तो हो ही नहीं रही। Okay, interesting. The greenish warblers from Europe and Siberia are now considered to be two separate species. क्योंकि चैप्टर के शुरू में हमने स्पीशीज की क्या डेफिनेशन लिखी थी? ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। यहाँ पे तो इंटरब्रीड हो ही नहीं रहा। तो जब इंटरब्रीड नहीं कर सकते तो डिफरेंट स्पीशीज हो बन चुके हैं। ये स्प्रेड लिख दिखाया हुआ है ग्रीनिश वॉर्बलर का। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्पीशीज, क्वेश्चन नंबर वन। So like there are a group of individuals having the same morphological, physiological, and biochemical behaviors, n- characteristics, and they're like um reproductively isolated, something like that. Okay, so they have similar biochemical, physiological, and morphological features. सही है. Now, what about their breeding का process? Are they able to interbreed? Uh, no, they're like reproductively isolated. So the same organisms like the same species. मतलब एक ही स्पीशीज की बात हो रही है या अभी हमने कोई स्पीसीएशन का प्रोसेस शुरू नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल वन ह्यूमन एंड अनदर ह्यूमन, उनमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल फीचर्स हैं। कैन टू ह्यूमंस इंटरब्रीड विद ईच अदर? Yes, they can. दे कैन, एंड उसके रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बनती है, इज इट फर्टाइल और इनफर्टाइल? Fertile. फर्टाइल। एंड डू दे बिकम पार्ट ऑफ द सेम हैबिटेट या आर दे इन डिफरेंट हैबिटेट? जैसे कुछ ह्यूमंस जंगल में रहेंगे, कुछ ह्यूमंस नॉर्मल अर्बन एरियाज में रहेंगे, ऐसा होता है या सबकी हैबिटेट सेम होती है? Same habitat. Same habitat. So these were the 3 points, not really about the habitat, but बाकी सारे points what we mentioned notes में. तो similar morphological, physiological, biochemical features interbreed with each other to produce fertile offspring. अच्छा, the part about reproductive isolation you said, वो तब होता है जब हम इन organisms of the same species को two different groups में separate कर देते हैं। अब जब हमने ग्रुप्स में सेपरेट कर दिया, तब हमने रिप्रोडक्टिव और जेनेटिक आइसोलेशन कर दी। बट बिफोर दैट इट्स जस्ट ऑर्गेनिजम्स रैंडमली रोमिंग अराउंड ऑफ द सेम स्पीशीज। एंड ये वाला जो पॉइंट था, इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अगर दो ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज के इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पा रहे, तो ये दो ऑर्गेनिजम्स वर नॉट फ्रॉम द सेम स्पीशीज टू स्टार्ट विद। डज दिस पॉइंट मेक सेंस? Yeah, it does. Okay. Now, state the likely isolating mechanism. वो कौन सा तरीका था अलग करने का ऑर्गेनिजम्स को और दो पॉपुलेशंस में डिवाइड करना ग्रीनिश वॉर्बलर को? क्या तरीका हमने इस्तेमाल किया? Geographical separation. जियोग्राफिकल सेपरेशन, बिल्कुल सही। सो जियोग्राफिकल सेपरेशन क्यों? व्हाई इज इट जियोग्राफिकल सेपरेशन? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ने फिजिकली माइग्रेट किया ईस्ट में, कुछ ने फिजिकली माइग्रेट किया लेफ्ट में। दे आर नॉट ऑल इन द सेम हैबिटेट, नॉट ऑल इन द सेम एनवायरनमेंट, एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे व्हिच इज बिहेवियरल सेपरेशन। नो, इट्स जियोग्राफिकल सेपरेशन। अच्छा, एक्सप्लेन कि ये स्पीसीएशन का प्रोसेस हुआ कैसे इन द ग्रीनिश वॉर्बलर। सो द पॉइंट्स अबाउट एलोपैट्रिक स्पीसीएशन अब यहाँ पे आएंगे। So you could tell it in order. In fact, that would be better because answer better structure होगा उस तरीके से. Can I have just 2 minutes? I'll just write it down.
Yeah, sure, sure. Yeah, so basically the different populations of the greenish warbler, they became separated by physical barriers since they migrated. So like there could be physical barriers in between them, like mountains or forests, or which basically prevented them from interbreeding. Mhm. And then in basically each isolated population, it was like exposed to different environmental conditions and different selection pressures. So, and also random mutations and natural selection could also take place. So, like, it causes differences in the traits, and Okay. traits like song patterns or the behaviors, or and like over time these differences became they can become significant enough, so like even if the populations come together again, they cannot mate successfully. And basically this the gradual accumulation of differences, it could lead to a emergence of distinct species from like the original greenish warbler population. Mm, बिल्कुल सही, all of the points बिल्कुल सही थे. So we have geographical separation, फिर reproductive isolation, genetic isolation, different selection pressures, different environmental conditions, different mutations, and you could just write either one of either natural selection या environmental conditions, because they both mean the same thing, right? Different environmental conditions होंगे तो different natural selections में selection pressures involved होंगे. एंड बिल्कुल सही, अक्यूमुलेटेड फिर ये डिफरेंसेस आएंगे फिनोटिपिक, जिसकी वजह से नाउ इफ वी टेक आउट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड अनदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन एंड दे मीट टुगेदर कहीं भी, they will not be able to mate or interbreed to produce fertile offspring, क्योंकि सबसे पहले तो वो recognize ही नहीं कर पाएंगे, appearance different होगी, and the song part which you said, बिल्कुल उनका different behaviors भी फिर present होंगे. Acha, it would also be better if you would write down the type of speciation. So which type of speciation is this? Allopatry. Allopatric. So that's basically a free mark, right? क्योंकि हमें already पता है किस तरीके की speciation है based on isolating mechanism कौन सा वाला था. And apart from that, all of the points were correct. अच्छा, now let's try one more question. We have the seahorse, hippocampus, whatever ये organism का नाम है. It's a seahorse. This is an unusual small fish. Okay, so it's not normal. सवाल ने पहले ही बता दिया है, and it's a small fish. It gives birth to live young, and it is the male rather than the female that becomes pregnant. Okay, तो मेल वाला रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब the male has the reproductive capacity, and it does not give birth to eggs. It does not lay eggs. It gives birth to live young, like humans. Figure 1.1 shows a seahorse. एक स्पीशीज में सी हॉर्स के एक टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है. किस टाइप की? डिसरप्टिव सिलेक्शन. कुड यू टेल मी व्हाट्स डिसरप्टिव सिलेक्शन? It's like when the selection pressure, it favors the organisms in the middle. It favors the organisms at both extremes rather than the organisms in the middle. बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जहाँ ऑर्गेनिज़म्स जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में हैं, इन द मिडल रेंज, इन द मिडल वैल्यू, द इंटरमीडिएट जो हम कहते हैं, उनको फेवर ना करना, उनको डिसफेवर करना, और जो एक्सट्रीम्स वाले फिनोटाइप्स वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको फेवर करना. सो इट्स बेसिकली अ डिसरप्शन. ऐसी चीज़ नॉर्मली होती नहीं है, इसलिए द वर्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन. एंड आगे भी लिखा था, दिस इज वेयर द एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देन द इंटरमीडिएट वंस. ओके, एक पॉपुलेशन के अंदर लार्ज फीमेल्स
mate with large males and small females mate with small males. मतलब जो organisms large होंगे वो opposite gender के large के साथ ही mate करेंगे. It's not large small small large. It's large large small small. Few intermediate size जिनकी size average size होती है middle size होती है, they are produced and they have a low survival rate. Sketch a graph on the axis below to show the distribution in the size of seahorses as a result of disruptive selection. So, किस तरीके का ग्राफ बनेगा ये? So like it's going to be like there's going to be a hump between in the middle, so like the normal distribution curve, it's going to have like sort of like a W shape. So something like this. The I think the hump is going to be towards the up, I think. Sorry, hump is going to be towards. Like the up, like it's not going to be that down, or does it not matter? Acha, so this middle part right here, this is basically talking about the frequency of the intermediate. अगर selection pressure इसको disfavor कर रहा था, does this hump have to be bigger or smaller or यहीं पे रहने दें? Like Oh, in this yeah. range या इस range में? Um, In the smaller वाली range, right? yeah, in this monitoring. क्योंकि selection pressure इनको disfavor कर रहा है. So again, think about the arrow. It's pushing down on this part of the graph and it's pulling this part of the graph upwards. क्योंकि इनको favor कर रहे हैं, मतलब इनकी frequency बढ़ रही है. इनको disfavor कर रहे हैं, इनकी frequency कम हो रही है. So just always remember, disruptive selection के graph में it's the only selection pressure या natural selection का graph जिसमें double hump होगा. Because दो extremes favor, middle value disfavored or intermediates are disfavored. Explain how disruptive selection has been maintained in this species of seahorse. Your answer is somewhere here. Just try this out. कि डिसरप्टिव सिलेक्शन एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीन बार हो गई, अक्रॉस इतनी सारी जनरेशंस ये डिसरप्टिव सिलेक्शन का कंसेप्ट मेंटेन कैसे किया गया है इस सीहॉर्स की स्पीशीज में? Basically, the intermediate size individuals, they have like a low survival rate. Yeah. So they die off quickly, and there are no alleles that are being passed on to the offspring. So they're Okay. not like surviving much. Right. Acha, let's talk about their mating behaviors. Large females mate with large males, small females mate with small males. क्या इस definition में या इस description में कहीं भी लिखा हुआ था intermediates mate with intermediates? No. No. So there's a problem which we see right here. Mating behavior में कुछ ना कुछ मसला है जहाँ पे फेवर नहीं दिया जा रहा इंटरमीडिएट्स को एंड फेवर दिया जा रहा है एक्सट्रीम फिनोटाइप्स वाले ऑर्गेनिज्म को. लार्ज विथ लार्ज, स्मॉल विथ स्मॉल. अच्छा, दूसरी चीज, अगर स्मॉल या इंटरमीडिएट सॉरी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो भी जाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट वैसे ही लो होता है. सो विच इज द पार्ट विच यू सेड कि सर्वाइवल रेट अगर लो होगा तो ये डिसएडवांटेजेस एलील्स होंगे. These are gonna be the alleles which are not gonna be passed down. And अगर alleles passed down नहीं होंगे तो फिर intermediates की frequency अभी भी कम ही रहेगी. But now look at the extremes. Large with large, small with small. बहुत सारी reproductions and mating processes हो रहे हैं. क्या frequency in extremes की बढ़ेगी? Could you repeat the question? So, in terms of their mating behavior, if large are mating with large and smalls are mating with smalls, तो बहुत सारे अब large produce होंगे और बहुत सारे small produce होंगे. तो is the extreme phenotype वाला organisms being favored? The extremes, yeah, the extremes are being favored. क्योंकि extremes क्या थे? Either large size or small size. अब अगर large females mate with large males, it's going to be a larger organism. And when small females mate with small males, it's going to be a smaller offspring.
So yes, frequency of the extreme phenotypes वाले organism, उनकी frequency बढ़ रही है, which is disruptive selection. तो the first point for your answer should be कि इनका mating behavior के अंदर ही size का condition आ जाती है. Their mating depends on the size. The mating partner is chosen based on size. An intermediate seahorse will never reproduce or breed with a large seahorse. That's a problem. That's a sort of a discrimination. So that is mating behavior में size की selection हो रही है, जिसकी वजह से बहुत कम intermediates ऐसे होते हैं जो mate कर जाते हैं, because of which they have a low survival rate, which means कि ये disadvantages alleles हैं, और alleles जो कि responsible हैं extreme phenotypes के लिए, मतलब वो alleles which make the seahorse very long, very big or very small, ये advantages alleles हैं which are passed downwards. Do all of these points make sense? Yeah, they do. तो द मेन मसला जो था वो मेटिंग बिहेवियर में ही था, कि क्योंकि मेटिंग पार्टनर साइज की बेसिस पे चूज किया जा रहा है, इंटरमीडिएट्स यहाँ पे एक डिसएडवांटेज लेके घूम रहे हैं. ओके, स्टेट द टर्म गिवन टू द टाइप ऑफ सिलेक्शन वेयर वेरिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक में मेंटेन्ड इन इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म ओवर टाइम. So you have three options: stabilizing, directional, disruptive. Stabilizing. Stabilizing, बिल्कुल. The variation is being maintained अपने original form में because the intermediates are favored. And look at the word stabilizing. हम इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं. Everything is going smoothly, everything is going stable, everything is maintained in its existing form. So yes, stabilizing selection. Okay, so I think that would be it for today. Any questions, any doubts on any of the questions which we solved? No, it's clear. Okay, of course, it doesn't mean that would be it for chapter 17 from your end. Please make sure to do as many topicals P4K as you can, chapter 17K. Next class, inshallah, we'll start with chapter 18, uh, which has all of those statistical tests, and it's a very, very interesting chapter. We'll look at it once we get there. Is it the biodiversity one or the genetic engineering? So the genetic engineering is chapter 19, biodiversity is chapter 18. Oh, okay. All right. So that would be it for today. Thank you. Love. Thank you. I love.